Hello and welcome to CommerceNet Scholars. The topic that we'll be discussing today for the insurance subject is the procedure of death claims. In my previous video, we have already understood what is the procedure for the settlement of the maturity claims. Today we'll understand the procedure for the settlement of the death claims. Obviously, when we are talking about the death claims, we are either talking about the whole life policies or we are focusing on the term insurances. Or in case the person has taken the endowment policy but the person is receiving the payment in case of death, not on the case of maturity. Let's understand that what happens once the person is dead, how the survivors of the deceased are going to receive the maturity amount. When the life assured dies before the date of maturity, the policy emerges into death claim and the amount of claim is paid to the nominee or assignee as the case may be. Now either the policy was assigned, so in that case the amount will be paid to the assignee, and in case there was no assignment, the policy only had a nominee, so the amount that has to be received as maturity claim, that will be given to the nominee of the policy decided by the person who had initially taken the policy. With the centralization of the policy, with the decentralization of the policy serving functions to branches, the settlement of death claim has also been dealt with the branch except early claim, that is claim within 2 years from the commencement of risk. If any claim arises within 2 years of the commencement of the risk, only that cannot be dealt in with the branch. Otherwise, all the remaining claims can be dealt in with the branch of the agency or the insurance company from where you have taken the policy, not only the head office. As soon as the death takes place, the nominee under the policy or the assignee or the legal heir should give intimation of death to the insurer. An agent can also give intimation to this effect. When a death claim intimation is received at branch office, the branch starts to deal the claim. Now, as soon as the person who had taken the policy is dead, it is the duty of the nominee or the assignee or any legal representative as assigned by the deceased person to inform the insurance company that the person who had taken the policy is no more and his claim has to be settled as death claim. तो ये बेसिकली किसका काम होगा? either the nominee or the assignee or the legal representative appointed by the person or the court of law. This you need to remember. ये तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि डेथ का इंटीमेशन या तो नॉमिनी करेगा या तो असाइनी करेगा या फिर कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ और द पर्सन हु हैड टेकन द इंश्योरेंस पॉलिसी. The death claim may be divided into two parts: premature claim or early claim or ordinary claim. Now premature or early claim, we'll understand what does it mean, and the second one is the ordinary claim. Basically when we are talking about premature और early claim, सिंपल सा मतलब ये है कि पॉलिसी जिस डेट से इशू हुई है, डॉक्यूमेंट जिस डेट से आपको रिसीव हुआ है, जिस डेट से कमेंस हुआ है, उसके 2 साल के अंदर ही ये डेथ क्लेम अवेल करना है पर्सन को. उसके 2 साल के अंदर ही डेथ हो चुकी है. तो बेसिकली 2 साल के अंदर जब मैंने आपको बताया था, जब हम सरेंडर वैल्यू भी कंसिडर करते हैं तो वो हम 2 साल के बाद ही कंसिडर करते हैं. तो जब हम डेथ क्लेम की बात करें और 2 साल के अंदर किसी पर्सन की डेथ हो जा रही है, तो वो सिचुएशन हो जाता है अर्ली या प्री मैच्योर क्लेम का, जिसमें थोड़ा सा अलग बेसिक कैलकुलेशन होगा. और ऑर्डिनरी क्लेम यानी कि जितने भी टेन्योर के लिए पर्सन ने पॉलिसी ली थी, वट एवर द नंबर ऑफ ईयर्स में भी एटलीस्ट 2 साल तक तो उसने प्रीमियम पे ऑफ किया है, उसके बाद ही उसकी डेथ हुई है. As you can see, early or premature claim, an early claim is one which results in death claim within a period of 2 years after the commencement of the policy or after its revival. Ordinary claim is one which does not fall in the category of early claim. Now, what are the documents required for the settlement? For settlement of death claim, the following documents are required depending upon the duration of the policy. सबसे पहले पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए जो कि आपको इंश्योरेंस कंपनी ने प्रोवाइड किया. डीड ऑफ असाइनमेंट अगर आपने पॉलिसी असाइन की है. प्रूफ ऑफ एज इफ नॉट एडमिटेड. If you have not admitted your age, at least you should have a proof that presents your current age. Then the certificate of death of the person, certificate of identity and burial or cremation, legal evidence of title
discharge form duly executed by the claimant with proper witnesses. I hope you understand what a discharge form is. जो फॉर्म आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है टू फिल एंड सबमिट टू द इंश्योरेंस कंपनी ताकि वो आपका क्लेम अमाउंट दे सके. तो मेजॉरिटी क्लेम के केस में तो जो पर्सन जिसने पॉलिसी लिया होता है वो खुद ही फॉर्म फिल करके देता है, लेकिन इस केस में इन द केस ऑफ डेथ आइदर द असाइनी, नॉमिनी और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी filling the form in the presence of a witness and will be sending it to the insurance company. Now alternative proof of death में क्या आ सकता है? Sometimes the life assured's death may result in some unnatural way, as for example train accident, air crash, suicide, murder, etc. Under these circumstances, last medical attendance certificate is not available. The insurer will accept the certificate issued by proper authorities in this respect. That is, in the case of suicide, murder or burnt cases, a police report is considered as a sufficient certificate. In case of air crash, the certificate issued by the air authority that the deceased was on board and died due to air accident is a sufficient proof of death. Obviously, when the person is dying by suicide or any accident, plane crash, train accident, whatever, there needs to be a proof कि हाँ वो person उस time पे उस plane में या उस train में present था और उसी accident में उसकी death हुई है. Proof of title. Ordinarily, a death claim payment is made to the nominee under the policy, which may be insured's wife, son, daughter, or any class of heir, or if the policy is assigned in any way to the assignee. Obviously, आपका जो policy, if you are taking insurance policy, आपको आपके बाद किसको मिलेगा? Either your wife, your children, or any legal representative, or the person to whom you have assigned the policy. Cases may arise when there is no nomination or assignment in the policy and it results into death claim. Under these circumstances, insurer would require legal evidence of title as well as succession certificate or probate of will if will was made at the time of death or earlier. The person who is going to get the benefits of the death claim needs to present some will in order to avail the death benefits. In case the person who had taken the policy has no legal representatives or survivors after him. Only a succession certificate is obtained from the person claiming under the policy, which shall be issued by the competent court of law. Obviously, that it's valid. If you have the will with you, if you are a person who is going to avail the benefits of the death claim on account of somebody, the person had no family, no children, no legal representative, so you must have a will that that person has mentioned your name कि मेरे बाद आप इस policy के benefits ले सकते हो. This shall be considered as a sufficient proof of title under the policy. Insurer may consider waiver of proof of title under certain circumstances subject to compliance of such other alternative required. Now, how will you calculate the claim amount? For the calculation of claim amount, a claim sheet is issued. This sheet contains all the details about the policy and premium position. कितना policy क्या पॉलिसी की डिटेल्स थी, एज, कितने सालों के लिए पॉलिसी लिया था आपने, किस तरह की पॉलिसी वो, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में हमारे डिफरेंट कैटेगराइजेशंस होते हैं ना, होल लाइफ, एंडाउमेंट, टर्म एंड ऑल. उसके अलावा प्रीमियम आपने कितना पे किया है, कितना बाकी रह गया था, कितना अमाउंट था प्रीमियम पे करने का, कॉम्पेंसेशन आपको कितना मिलना था, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं. इफ देयर सब्सिस्ट एनी लोन एंड इंटरेस्ट, द सेम इज कॉल्ड फ्रॉम द लोन डिपार्टमेंट. अगर आपने उस पॉलिसी पे कोई लोन ले रखा है तो ऑब्वियसली द लोन डिपार्टमेंट विल बी इंटीमेटेड फॉर इट. द लोन एंड इंटरेस्ट एंड अदर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ऑन द पॉलिसी इज डिडक्टेड फ्रॉम द क्लेम अमाउंट. द क्लेम अमाउंट इज अराइव्ड एज अंडर. जो भी आपका लोन लिया है आपने, उसका लोन का अमाउंट या जो भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ था वो सब पे ऑफ करने के बाद जितना पॉलिसी अमाउंट, जितना प्रीमियम अमाउंट अभी पे करना था, ऑल दैट इज डिडक्टेड एंड देन द अमाउंट इज पेड. How is it calculated? This is the basic formula for it. Claim amount is equal to basic sum assured, जितना आपको assure किया गया था, plus the bonus attached, plus refund of accident premium, plus terminal bonus, जिसमें से माइनस करेंगे आप लोन्स प्लस इंटरेस्ट प्लस चार्जेस एंड आउटस्टैंडिंग प्रीमियम. जो आपका आउटस्टैंडिंग प्रीमियम था वो अमाउंट ऑफ माइनस कर दोगे. बेसिकली जितना आपको रिसीव होने वाला था, जो आपको पॉलिसी में मेंशन था कि ये आपको क्लेम अमाउंट मिलेगा, उसमें जो भी बोनस जितना बन रहा होगा, जितना भी कुछ आपको रिफंड मिलना होगा, वो सब ऐड करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे जितने भी चार्जेस होंगे आपके इंश्योरेंस कंपनी के और जितना प्रीमियम देना भी आपको रह गया होगा. A discharge form is sent to the claimant and he is advised to return the same, allowing the certificate and policy document at the earliest to proceed for the settlement of claim. Claimant यानी कि जो person death benefits avail करेगा उसको discharge form send किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, और वो fill करके इंश्योरेंस कंपनी को send करेगा. Admission of claim. On receipt of death claim certificate and the claimant statement, a thorough scrutiny is made at the branch and if the same is found satisfactory, claim is admitted. अगर हर चीज़ satisfactory है तो ही claim admit किया जाता है और फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको
पे ऑफ करती है। एन एंट्री इज मेड इन रजिस्टर कॉल्ड डेथ क्लेम इंटीमेशन रजिस्टर। और मेच्योरिटी क्लेम इंटीमेशन कहाँ होता है? मेच्योरिटी क्लेम रजिस्टर में। इट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट टू मेंटेन दिस रजिस्टर। द डेथ इंटीमेशन क्लेम रजिस्टर कंटेन्स ऑल द डिटेल्स अबाउट द पॉलिसी सच एज पॉलिसी नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ डिसीज्ड, प्रीमियम पेड एंड द अमाउंट पेबल। दिस इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एज पर सेक्शन 14B ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ये, बट अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 14B ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अंडर अर्ली क्लेम एंड ऑर्डिनरी क्लेम। अर्ली क्लेम यानी कि 2 साल के अंदर, और ऑर्डिनरी क्लेम यानी कि 2 साल के बाद for any number of years. If the life assured dies within 2 years from the commencement of the policy or its subsequent revival, it is called early claim or premature claim, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। A thorough investigation is made by the officials to ascertain whether the deceased was suffering from any ailment which may not have been mentioned in the proposal form. An insurance contract is a contract of utmost good faith and therefore it is the duty of the assured to not to suppress any material fact. Now, अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी, if any person has taken the insurance policy और उसको कोई सीरियस एलिमेंट था जो कि उसने इंश्योरेंस कंपनी से नहीं बताया, छुपाया उस चीज़ को, तो उस केस में वो प्रीमियम का क्लेम पाने के उसके जो सर्वाइवर्स होते हैं उनको नहीं मिल सकता, क्योंकि ये वायलेशन होता है इंश्योरेंस के प्रिंसिपल का, विच रिप्रेजेंट्स द अटमोस्ट गुड फेथ। The officials will look into the cause of death, make inquiries from the medical attendant, etc. Inquiries should also be made from the employers about the leave position and reasons for such leave. If the claim falls under ordinary class, the office should scrutinize the claim forms thoroughly before the same is admitted for payment. और अगर ordinary claim है तो जितना भी claim forms हैं उसको अच्छे से scrutinize करना, सारी formalities fulfill करना, claimant का के बारे में information लेना, उसके बाद कितना अमाउंट मिलेगा, कितने ईयर्स तक प्रीमियम पे किया है, कितना बाकी है, ये सब कैलकुलेट करने के बाद ये सब चीज़ें जब कैलकुलेट हो जाएंगी तो जो पर्सन होता है, क्लेमेंट होता है, उसको अमाउंट मिल जाता है। पेमेंट एंड डिस्चार्ज। Having satisfied that all the requirements are complied with, the department shall proceed for payment of the claim. The nominee or assignee should sign the discharge form with proper witnesses. The payment is entered in the claim payment register and money is transferred to the claimant's bank account. Now, whoever is the claimant, the nominee or the assignee will be getting the amount in the bank account. Claims, next heading is claims procedure in respect of a life insurance policy under Insurance Regulatory Development Authority, protection of policy holders interest regulations. ये कुछ कह सकते हैं हम कि प्रोसीजर्स हैं जो कि IRDA से रेगुलेटेड हैं। The first one says a life insurance policy shall state the primary documents which are normally required to submitted by a claimant in support of a claim. Life insurance policy has to inform well in advance कि कौन से documents necessary हैं to be presented by the claimant at the time of the death of the person who had taken the insurance policy, that is the insured. A life insurance company upon receiving a claim shall process the claim without delay. Any queries or requirement of additional documents to the extent possible shall be raised all at once and not in a piecemeal manner within a period of 15 days of the receipt of the claim. जो भी इंक्वायरी करनी है इंश्योरेंस कंपनी को, जो भी स्क्रूटिनी करनी है, जो भी इन्वेस्टिगेशंस करनी है इंश्योरेंस कंपनी को, वो एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट कर लेनी है और ये कोशिश करनी है कि विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द क्लेम फॉर्म, द पॉइंट एट विच द क्लेमेंट इज अप्लाइंग टू द इंश्योरेंस कंपनी, उसके 15 डेज के अंदर अंदर सारा का सारा क्लेम क्लियर कर दे इंश्योरेंस कंपनी, सो दैट देर इज नो डिले एंड देर इज नो वायलेशन इन द राइट्स ऑफ द इंश्योर्ड. अ क्लेम अंडर अ लाइफ पॉलिसी शैल बी पेड or be disputed giving all the relevant reasons within 30 days from the date of receipt. So पेमेंट कब होना है? 30 days of receipt, और इन्वेस्टिगेशन आपको 15 days के अंदर कंप्लीट करनी है, और जो भी आपको क्लेम अमाउंट पे करना है वो जिस दिन से हमने अप्लाई किया, सपोज आज हमने अप्लाई किया 23 सितंबर को, तो विद इन 30 days हमें क्लेम अमाउंट मिल जाना चाहिए. 15 days में सारी इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएंगे. 15 days हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पज, एंड दिस 15 days का टाइम जो है हमारा, दिस इज नॉट ओनली द केस फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी but other policies also the same time schedule is there. However, wherein the circumstances of a claim warrant an investigation in the opinion of the insurance company, it shall initiate and complete such an investigation at the earliest. Where in the opinion of the insurance company the circumstances of a claim warrant an investigation, it shall initiate and complete such investigation at the earliest in case not later than 6 months from the time of lodging the claim. अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है या कुछ लगता है इंश्योरेंस कंपनी को कि कुछ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है क्लेमेंट, वॉट एवर बी द रीजंस, तो उस केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में भी 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए टू डिसाइड कि क्लेमेंट को अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा.
Subject to the provisions of Section 47 of the Act, where a claim is ready for payment but the payment cannot be made due to any reasons of proper identification of the payee, the life insurer shall hold the amount of benefit of the payee, and such an amount shall earn interest at the rate applicable to a savings bank account with a scheduled bank, effective from 30 days following the submission of all papers and documents. अब अगर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद भी आपको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता है, सो इन दैट केस इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट दैट यू वर एंटाइटल्ड टू रिसीव, एंड दिस इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 47 of the Insurance Act. Where there is delay on the part of the insurer in processing a claim for a reason other than one covered by sub-regulation 4, the life insurance company shall pay interest on the claim amount at a rate which is 2% above the bank rate prevalent at the beginning of the financial year in which the claim is reviewed by it. So in case there is a lot of time that is being taken, so the interest is payable on the amount which is at the rate of above 2% of the bank rate that is prevalent for that particular current financial year. I just hope सारी query, सारी doubts आपकी clear हो चुकी होंगी as far as the settlement of the death claims. If any doubts you have, you can mention down in the comment section below, or you can text me or call me. As you all know, those of you have my number. So that's all for today. I'm winding up. That next video we'll be doing in the next topic we'll be doing the next video. So till then, take care. Thank you. Have a nice day.